Hello students, welcome to physics class. In our previous lecture, we were talking about the applications of dimension analysis. Regarding the same topic, today we will study about the third application, that is conversion from one system of unit to another. Suppose we are having a physical quantity x. We know that physical quantity x is written as n into u. What is n? N is the numerical value and u is the unit. We want to convert the quantity from one system to another, units of quantity from one to system to another. Suppose in one system the fundamental units are m1, l1, t1. The dimensions of these fundamental units are a, b, c and the numerical value is n1. कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी को एक सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होंगी? m1, l1, t1. डायमेंशंस क्या होगी? a, b एंड c और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? n1. एंड इन अनदर सिस्टम suppose the fundamental units are m2, l2, t2. The dimension will remain same a, b, c and the value is n2. तो इन दोनों सिस्टम्स में हम क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू n1, m1a, l1b, t1c. और सेकेंड सिस्टम में हम लिखेंगे x इज इक्वल टू n2, m2a, l2b, t2c. Since we are writing the same physical quantity, that's why I had written x here. So using equation 1 and 2, as both represents x, so both right hand side of both the equation will be same. So n1, m1a, l1b, t1c is equal to m2, n2, m2a, l2b and t2c. What do we have to find out? We have to find out n2. So n2 will be equal to n1, m1a, l1b, t1c upon m2a, l2b, t2c. And on solving, n2 will be equal to n1, m1 by m2a, l1 by l2b and t1 by t2c. See here how a physical quantity is represented as x is equal to n1, m1a, l1b, t1c. या फिर हम इसको इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल से समझाया, इधर देखेंगे आप सब. Suppose we are talking about we have to find out 1 joule is equal to how many erg. What is joule? Joule is the SI system of SI unit of energy and erg is the CGS unit of energy. It means we want to convert SI unit to CGS. So we have to go from one system of unit to another. SI unit of energy को हमें किस में कन्वर्ट करना है? CGS unit of energy में. और हमें क्या दिया है? 1 joule. And what we have to find out? We have to find out the numerical value in another system of unit. Means N1 is given to us. N1 is 1. n2 we have to find out. Now इस फॉर्मूला में हमारे पास n1 है, n2 हमें फाइंड आउट करना है. हाउ विल चूज m1, m2, l1, l2, t1, t2, a, b, c. हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? हियर वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड distance, so m. The unit will be kilogram meter square second minus 2. So in SI unit, joule is written as kilogram meter square second minus 2. Means I had converted joule into fundamental quantities. तो ये हमारे क्या हो गए? m1, ये क्या हो गया? l1 और ये क्या हो गया? t1. अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? CGS में. CGS में इन प्लेस ऑफ किलोग्राम यहाँ पर क्या होगा? ग्राम. मीटर की जगह क्या होगा? सेंटीमीटर. और सेकंड की जगह क्या होगा? सेकंड. सी हियर पावर्स ऑलवेज रिमेन सेम व्हेन वी गो फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर. तो हमारे पास m1 है, l1 है, t1 है, m2 है, l2 है, t2 है, a, b, c we know, and using this equation 1 we can find out the value of n2. I had shown one example here. How can we convert Newton into dyne? 1 Newton into dyne. What is Newton? Newton is SI unit of force and dyne is CGS unit of force. I had solved this example and the conversion of joule into erg you have to do yourself. Now see here how we will convert Newton into dyne. In SI system, M1, L1, T1, N1, all these things will write down.
हम SI सिस्टम की बात कर रहे हैं तो फोर्स के केस में, SI सिस्टम के केस में m1 इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 kg, L1 मीटर, T1 इज सेकेंड. In CGS m2 is gram, L2 is centimeter and T2 is second. N1 is given 1 क्योंकि हमें 1 न्यूटन बताना है. और how many dyne? N2 is unknown. A is 1, B is equal to 1, C is equal to -2. ये पार्ट्स हमारे पास कहाँ से आई? या चाहे तो यूनिट से ले सकते हैं या फिर डायमेंशनल फार्मूला से भी आपको क्लियर हो सकता है. डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स इज MLT -2. तो पावर ऑफ M हमेशा क्या होगा? 1. और डायमेंशन ऑफ M क्या होगा? 1. डायमेंशन ऑफ L भी क्या होगा? 1. और डायमेंशन ऑफ T क्या होगा? -2. सो A इज़ 1, B इज़ 1, C इज़ -2. We are having M1, L1, T1, N1, M2, L2, T2, A, B, C. We will use all these value in equation number 1, and on putting it will get N2 is equal to 1 kg upon 1 gram power A, 1 meter upon 1 centimeter power B, 1 second upon 1 second power C. Now we'll convert kilogram into gram. 1000 gram over 1 gram power 1, 100 centimeter over 1 centimeter power 1, 1 second by 1 second power -2. We will solve it, and on solving we get N2 is equal to 10 raised to power 5. So 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 dyne. Using the same method, find out 1 joule is equal to how many earth. This is all about for today's lecture. Have a nice day.